1. Okay, so this composite transformation will be composite matrix will involve the multiplication of three matrices in the reverse sequence. Suppose that we roll, pitch and yaw, then the first matrix transformation matrix will define the rotation of roll and then pitch and then yaw. Okay, post pre multiplication will be there. So is it clear about? Always there are the pre multiplications are used for the sequence. Suppose that ypr is there, then y for ya the rotational matrix will be at the last. For pitch it will be in the middle, and for roll it will be in the first. Okay, so now this is now I come to the homogeneous transformations. Okay, in homogeneous transformations, here this is the homogeneous transformation. In the homogeneous transformation, a complete transformation with rotation as well as translational motion is used to represent a system. Suppose that in any manipulator system, here I give you the example I have shown here. Suppose that here there is a rigid body, that is 0 coordinate x 0 by 0 and origin 0. Here at distance of d0 vector is in y direction. Then what will happen? Here there is a rotation of theta 1, and again there is a rotation of theta 2. So now see that these joints are also moving relative to each other, means the joints have changed the position of d1. Not only there are rotation here, if rotation only is there, then suppose that it can rotate like this in the same point, but here d1 distance is covered by between the joints. So what will happen? Here the translational matrix will also come. Okay, so complete system will be defined by the homogeneous transformations. Okay, so now I show you. So this is the perspective, that is means perspective vector is a 1:3 vector, and sigma is a scale vector. Rotation matrix is a 3:3 matrix, which represents which has been discussed earlier, that is in terms of cos theta and sin theta, and that is 1. And translational matrix is the vector of the elements in which they are moving. Suppose that I show you here. Suppose a three directional there is a axis this, and one joint is here and second joint is here. Okay, then the total vector d of the link is this. Then what will happen here? This is the dx, this is the dx, this is the dy direction, and this is in the z direction, dz. Okay, dz. Okay, so what is the vector representing the this movement of joint, means there is a separation between the joints. Then the homogeneous translational matrix will be given by this is dx, dy and dz. Okay,
Understand? Suppose there is a vector D which represents the link. Then the total length of the link is D. Then the projected length in the x direction and projected length in y direction and z direction will be dx, dy, and dz. Then the p will be represented by dx, dy, and dz vector. Okay, and in this way, complete homogeneous transformation of 4 by 4 order is defined. Now we calculate the homogeneous transformation for pure rotation and pure translation motion. Here, suppose that there is the rotation at the same origin. Suppose here I show you that previously the position of the end effector was in this direction, and now this same has rotated in this direction. Then there is a rotation of only 90 degree, and there is no any movement of this joint. Means only we are defining the rotation matrix only for a particular joint. Okay, so what will happen here? There will be a zero, no any there only for individual joint it is being discussed. So only the rotation will be there. So all these elements will be zero, and this element will be Kate's fundamental homogeneous rotation matrix. Suppose that along x-axis I equal to 1. Along x-axis we are using the 5 degree rotation. Someone may use the rotation x comma phi. Okay, so what is the rotation matrix here? X1 phi means in the direction of x, this rotational transform matrix, and this translation matrix, this one and this all zero elements. Okay, is it clear? हम लोगों ने अभी क्या we have discussed in previous lectures only about the determining the rotational matrix for a particular angle of rotation. Okay, but in a robot there are multiple links and distances between different joints and movement in different joints in different angles. So there will be a translational as well as rotational motion. So complete homogeneous matrix will define the robotic system. So here then one example is taken. Suppose that along axis 1 pi by 4 rotation angle pi by 4 is rotated. Then the pure translation motion will represent the homogeneous transformation in this way. R1 pi by 4 means along x-axis, then transformation for x-axis is 1 cos theta minus sin theta and cos theta, and this is there is no any translational motion between that joint, because that is for individual joint and only rotation are there. So these all the elements will be zero, because joint to joint distance at that point is zero. Okay, now you see that suppose that in moving frame we have the coordinates 0 0 10, and 1 is kept for the scaling factor. 0 0 10 is the coordinate of the moving frame origin. Okay, then what will be the origin of the fixed frame? This is 0 minus 7.07 7.071. So this is a scaling factor. Okay, so totally the q point will be defined by x, y, and z, that is 0 minus 7.07 7.07 column vector, that is here it is written the transpose. Okay, so is it clear?
स्टूडेंट्स, अब देखो मैं आपको दिखाता हूं दूसरा फिगर. Here we see that there is a translational motion of 2 units. Okay, 2 units. Okay, this is prismatic joint. Again, this is prismatic joint. Suppose this is also a prismatic joint, up and down, and this is also prismatic joint. So a robot may have revolute joint. Suppose we can say that we have this prismatic joint, and this is also a prismatic joint. Okay, and then rotation matrix. Suppose that this is the end effector and this is the rotation matrix. Then what will happen? We can change this length, we can change this length, and we can change the, suppose it is a link here, and we can change the angle of this. Then we can change the theta, we can change the height, we can change the distance. So here this is prismatic, and this is rotational. Understand? So here suppose 2 units displacement is there, again 2 unit displacement in z direction, 2 unit displacement in y direction, and there is a 90-degree rotation. Okay, so this is an example of a robot manipulator with prismatic and revolute joints. So what will happen here? Suppose only the thing is that only we are using the point to point translational motion. Okay, okay. Then vector p represents px, py, and pz. Okay, suppose. Understand? Then what is the rotation matrix? P1, P2, P3 in x direction, in y direction, in z direction. Okay, so because there is no any rotation in the angle, so cos 0 equal to 1, sin 0 equal to 0, this will be the rotation matrix. Means rotation matrix will be identity matrix. Means there is no any change in the rotational position. Okay, there is no change in the orientation. However, there is a change in the position of the origin. ओके, यहाँ से आप देख लीजिए, ये पोजीशन थी पहले और यहाँ ट्रांसफॉर्म होके और यहाँ पे आ गया. अभी अगर हम जस्ट वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट देयर इज अ चेंज इन एंगल, देन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 यूनिट्स व्हाट विल हैपन? In x direction there is a 0 movement, in y direction there is 2, and in z direction, suppose for first transformation we are getting, suppose we are getting the first transformation here. So from here to here the transformation will be like this: 0 in x direction, 2 in the y direction, and 0 in the z direction. And then in second translational motion, what will happen? In x direction there will be 0 movement, in y direction there will be 0 movement, and in z direction there will be 2. So in first matrix you will use P1, P2 and P3 like this. Okay, 0, 2 and 0. In second in second conversion you will get, this is for suppose that you want to get the homogeneous transformation from 1 to 0. Okay, here you want to get the transformation from 2 to 1, then you will use the px,
P Y and P Z like this. Okay, 0 0 2. Suppose that at any condition the thing is that it simultaneously in all the directions the movement are there. Then what will happen? Suppose instantly the 2 2 and 3 in x direction 2, in y direction 2, and in z direction we are moving 3 units. Then px, py, pz will be 2 2 and 3. ये आपको समझ में आ रहा है क्या? हेलो स्टूडेंट्स, यस सर। ये अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो बता दो, हम रिपीट कर दें। पूरा समझ में आ रहा है ये? हाँ बोलो भाई, जिसको दिक्कत हो तो बताओ, कहीं समझ में ना आ रहा हो तो। हो सकता है ऐसा हो कि पूरा ही समझ में ना आ रहा हो, तुम लोग एजिटेशन में बोल नहीं रहे होगे, तो बोल दो भाई। तो ठीक है, यहाँ पे तो आपको ये समझ में आ गया ना कि एक पार्टिकुलर पॉइंट का कैसे प्रोजेक्शन लेंगे, ठीक है ना। एक वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे डी, तो उसका मूवमेंट अगर यहाँ पे मतलब लिंक डिस्टेंस ये है, और ऐसे ही यहाँ पे जो है मूवमेंट्स हैं तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड लेंगे। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि ये P1, P2, P3 क्या है। दिस इज द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द जॉइंट इन एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन। अब सपोज कि टाइम के साथ में अगर उसका प्रिज्मेटिक जॉइंट का लेंथ बदल रहा है तो दिस विल बी ए फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसा भी तो हो सकता है। तो डायनेमिक्स के टाइम पे सब कवर करेंगे, बट वी एज्यूम दैट देयर इज सर्टेन कांस्टेंट वैल्यू। तो द ट्रांस पी इज द फंडामेंटल होमोजीनियस ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, फंडामेंटल होमोजीनियस ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, होमोजीनियस रोटेशन मैट्रिक्स, होमोजीनियस ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। ओके, तो सपोज वी हैव an example here. This is the identity matrix 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1 and 5 minus 3 0. This is the here it is written, you can say that coordinate moving coordinate frame relative to fixed f moves by 5 units along x axis minus 3 units along y axis. Then what will happen? 5 px, py, pz. Px is 5, py is minus 3 and pz is 0. There is no any movement along the z axis. Then the suppose this is the coordinate, some coordinate in moving frame 0 0 10. Then the coordinate in the new frame will be coordinate in the fixed frame will be given by this identity matrix, this this translation matrix, and this perspective and this scale factor. Okay, so the new coordinate of this old coordinate, moving coordinate will be in terms of fixed coordinate will be 5 minus 3 10 and 1. Okay, so is it clear to you? Here you can see that here we have used only the translation, homogeneous translation. Okay, and at that in that example we had used only the rotational translation, homogeneous rotation. Okay, homogeneous rotation. And if there is a composite homogeneous composite transformation, means when there is rotation as well as here inverse translation. The inverse translation is always defined as
t trans minus t means it is also suppose we are moving the x axis. Suppose here I will show you by example. This frame, this is suppose moving frame and this is fixed frame. Okay, moving frame is moving relative to f. M is moving relative to f. It is how much it is moving? Minus 2 units. Okay, in this direction. Then the movement of fixed frame relative to m is m से ये m के रिलेटिव कितना होगा f. ये एक तरह से -2 डिस्टेंस पर है ना, मतलब इसके रिलेटिव में अगर देखें तो ये जो फिक्स्ड फ्रेम है वो -2 में हो गया ना. ओके, सो जब भी हम कहेंगे कि ट्रांसलेशन मैट्रिक्स फ्रॉम एफ एम टू एफ, ये क्या होगा? ये ट्रांसलेशन मैट्रिक्स एफ का इनवर्स, एफ का इनवर्स इसका मतलब क्या होगा? सीधा सीधा जो भी हमारी यूनिट्स हैं वो माइनस में हो जाएंगी, तो टी ये हो जाएगा -p. ओके, here you can understand from this equation. ओके, अगर हम सेम ट्रांसफॉर्मेशन को -t से ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन आएगा. इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? What is the meaning of inverse transformation? When we are moving the m relative to f, then tfm defines m moving relative to f, and inverse transformation क्या होगा? What is the position of f relative to m? तो यहाँ पे एक तरह से -2 का मूवमेंट हो रहा है, तो the same transformation with -2 will be this. Okay, तो -2 -p means -px -py -pz. ओके, सपोज अगर ये वेक्टर इधर को रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन, ओके, तो इसका क्या होगा? -px से डिफाइन होगा, -p वेक्टर है तो अपोजिट डायरेक्शन है, 180 डिग्री से घूम गया वेक्टर, तो -p -py -pz डिफाइन करेगा उसको. ओके, कैन यू अंडरस्टैंड दिस? समझ में आ रहा है क्या? यस सर. नहीं समझ में आ रहा बता देना भाई. ओके, तो इनवर्स रोटेशन, इनवर्स रोटेशन क्या है? इनवर्स रोटेशन मीन्स वी आर मूविंग सम फ्रेम by an angle phi along the axis k. Okay, then it is same as moving the along -phi along the same axis, that will be inverse. Okay, inverse rotation क्या होगा कि अगर हम f के comparatively suppose here I will show you. Here we have rotated this moving frame relative to f, then r rotation relative to f. ये क्या होगा कि मतलब -90 डिग्री से क्लॉकवाइज घूमा. ओके, 90 डिग्री से क्लॉकवाइज घूमा, तो इसका मतलब कि ये क्या होगा? m to f मीन्स
the fixed frame is moving, fixed frame has moved 90 degree, m जो है फिक्स्ड f के रिलेटिव में ये क्या क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये फिक्स्ड फ्रेम मूविंग फ्रेम के रिलेटिव एंटी क्लॉकवाइज में घूम गया, मींस -90 डिग्री। ओके, तो ये यही है इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, मींस आर एफ एम इक्वल टू आर ये -90 डिग्री। ओके, और सेम एक्सिस के, सेम एक्सिस के रिलेटिव, यह जेड एक्सिस है, in the along the same z axis the frame f has rotated -90 degree, or you can say the frame m has rotated +90 degree relative to frame f. So what will happen, this is the equation. ओके, देखो यहाँ पैड से लिखते सीधा नहीं बन पा रहा है हमसे, ठीक है, तो हमेशा वो टेढ़ा ही लिखाता है क्योंकि ये इसका डायरेक्शन कुछ ऐसे ही जाता है फिंगर्स का। तो you can understand from this equation what is happening. अगर हमारा ये cos थीटा sin थीटा के इसके टर्म्स में ये दिया है, सपोज कि एक रोटेशन मैट्रिक्स दिया है एफ एम, ठीक है, थीटा के। अब हमको निकालना है क्या, रोटेशन मैट्रिक्स, रोटेशन मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स, या कि यू कैन से मतलब उसका इनवर्स। तो इनवर्स मैट्रिक्स तो यही होगा ना कि अगर एफ मतलब मूविंग फ्रेम को फिक्स फ्रेम के रिलेटिव हमने लिया है, थीटा के एक्सिस के अलांग घूम रहा है, देन जो फिक्स्ड फ्रेम मूविंग फ्रेम के रिलेटिव क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो दिस इज द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस एम, ओके, दिस -1, ऐसा हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इट इज सेम एज आर एफ एम माइनस थीटा के। अंडरस्टैंड, इज इट क्लियर अबाउट? प्लीज Yes, sir. ऑन। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? Yes, तो sir. यही चीज क्या हो गई, एक तरह से ये इनवर्स जो है वो ट्रांसपोज ही के टर्म्स में होता है रोटेशन मैट्रिक्स में, क्योंकि cos माइनस थीटा माइनस नीचे चला जाएगा, माइनस थीटा नीचे हो जाएगा, वो cos थीटा साइन थीटा पॉजिटिव वाला ऊपर चला जाएगा, तो ट्रांसपोज हो जाता है एक दूसरे का। इसीलिए कि जो इनवर्स जो है इट इज आल्सो द सेम थिंग एज दिस इज the transpose of this matrix. Okay, inverse of this matrix is equal to the transpose of this matrix, rotation matrix. Understand? तो यहाँ पे ये फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन में जो इनवर्स रोटेशन है, इनवर्स रोटेशन मैट्रिक्स, ये हमने देखा। नाउ वी सी द कंपोजिट होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन। what means the composite homogeneous transformation? In composite homogeneous transformation we use the orientation of the links as well as the distance. We also consider the distance between the origins. Okay, जैसे कि यहाँ पे हमने दिखाया आपको कि यहाँ पे न केवल एक नए फ्रेम का ओरिजिन शिफ्ट हुआ है, बट ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है रोटेट भी हुए हैं, ठीक है।
तो यहाँ शिफ्टिंग भी हुई ओरिजिन में। ये ओरिजिन पहले सपोज कि यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पे आया ये ओरिजिन, उसके बाद और मूवमेंट हुआ उस ओरिजिन में, तो वो ओरिजिन पहुंच गया यहाँ पर। अब ओरिजिन पहुंच तो गया, बट नाउ मैनिपुलेटर इज आल्सो टेकिंग एंगुलर पोजीशन। यहाँ प्रिज्मेटिक जॉइंट था, उसने लीनियर पोजीशन सेट की, एंड देयर इज चेंज इन द लिंक लेंथ। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, दो यूनिट का हॉरिजॉन्टल, 2 यूनिट का वर्टिकल, और ये एंगल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इन दैट केस वी यूज द कंपोजिट होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन। सो ऑलवेज प्री मल्टीप्लीकेशन इज यूज्ड। सपोज दैट यहाँ पे पहले हम चाहते हैं कि एक ट्रांसलेशन हो सेकेंड एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट का। हियर यू कैन से 3 यूनिट्स मूवमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस F2। ओके, तो सेकेंड एक्सिस के रिलेटिव सेकेंड एक्सिस की डायरेक्शन में 3 यूनिट्स का मूवमेंट होगा, तो उसके लिए हमारा क्या होगा, कंपोजिट ये ट्रांसलेशन होमोजीनियस ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। दिस विल बी 0 in the second matrix, in second axis there is a movement of 3, and in third axis there is movement of 0. Then this will be the vector for translation. This 3 by 3 is the vector for the rotation in the case when we are considering only the translational motion. Okay, this whole translation matrix will define this. Here we are not considering any rotation. Now in this matrix we consider only the rotation along the third axis with pi degree. Okay, so along the third axis what will be cos theta minus sin theta minus sin theta cos theta. तो cos theta यहाँ पे हो cos pi minus 1 and sin pi equal to 0 and 0 and minus 1. तो यहाँ पे ये आ गया, एंड here during the rotation matrix we are considering no any translation matrix. तो एक कंप्लीट जो होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है आफ्टर द रोटेशन एंड एज वेल एज आफ्टर द ट्रांसलेशन, वो क्या होगा, दैट विल बी द प्री मल्टीप्लीकेशन ऑफ ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन मैट्रिक्स. ओके, होमोजीनियस. अब देखो यहाँ पे ये होमोजीनियस वर्ड आ जाएगा, बिकॉज केवल अगर 3/3 का मैट्रिक्स हम लेते हैं तो ये रोटेशन मैट्रिक्स कहलाएगा, बट व्हेन वी आर कंसिडरिंग the translation matrix as translation vector as scaling vector and perspective vector together, then this is complete called the homogeneous translation matrix when there is no any rotation. Here this is the homogeneous rotation matrix when there is no any linear motion. Okay, then by multiplying both we will get the complete homogeneous transformation for the system. Here suppose that 1 0 0 is the any point in coordinate moving coordinate, then in the fixed coordinate what will be the position of that point, -1 -3 0 and 1. Okay, so here you can see there is a movement along the f axis. There is movement along the second axis in the -3 units. Okay, so the displacement of the origin has gone -3. Okay, can you see the cursor here? Dear students, can you see the cursor here? Yes, sir. Okay, Yes, so sir.
here -3 of the translational movement is there, and now the axis has rotated by pi degree, means fixed frame x direction, y direction of fixed frame is in this direction, but y axis in the moving frame, second axis, that is here is 2 represents the second axis, that is y. Okay, so y axis in the moving frame has gone 180-degree angular displacement. ओके, सो मूवमेंट प्लस रोटेशनल। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे एक तरह से क्या हुआ कि एक लिंक है, एक ये ज्वाइंट हो गया, 3 - 3 का लेंथ है और दूसरा वो है, तो यहाँ पे एक रोटेशन हो रहा है, बट यहाँ पे लिंक के बीच में लेंथ भी है। तो रोबोटिक सिस्टम कैन बी completely defined by a composite homogeneous transformation. Here you see another example, and here it is clear by multiplication that the same coordinates are coming out. अगर हम ये यहाँ पे देख रहे हैं, प्री मल्टीप्लिकेशन हमने किया इसके पहले, और यहाँ पे ट्रांसलेशनल देन रोटेशन यूज किया हमने। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले रोटेशन यूज किया फिर ट्रांसलेशन, एंड कोऑर्डिनेट्स -1 3 0 आर सेम एज अबोव। ओके, सो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स और रोटेशन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इंटरचेंज हो जाएगा, तो देयर विल बी नो एनी डिफरेंस। हियर आई विल शो यू विथ वन एग्जांपल। हियर सम रूल्स आर गिवन हियर। Here you can see, are you looking into the equation number 2.23 and 2.24? Here there is a interchange in the multiplication of the translation and rotation matrix. So translation u along u with distance d, and rotation along u axis with angle theta is same with the interchange sequence. Okay, here you can see different two different angles are there for rotation along the same axis, then overall rotation matrix will be defined by this. So now I will consider the inverse homogeneous transformation. तो homogeneous transformation 4x4 matrix का है, then it is not easy to take the inverse and all, and the inverse to get the inverse of the homogeneous transformation, we will use this equation. We will take the transpose of the rotation matrix, we will take the transpose of the rotation matrix and then multiply by the translational matrix, and then a negative sign will be there. So this will be a vector, column vector. This will be a 3x3 matrix, and this will be same. So here t minus t inverse into t r t into r. ओके, ये कैसे आया है t इनवर्स? यहाँ पे अगर t अगर r p, ये जो हमने शुरू में मैट्रिक्स दिखाया है, फॉर एग्जांपल आई शो यू हियर, इसका आप इनवर्स लीजिए। यहाँ पे 0 रखिए, यहाँ 1 रखिए। हियर यू टेक द 0 एंड हियर यू कीप 1 एंड टेक द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। क्या आएगा, दिखाओ भाई कोई करके। यू टेक दिस 0 and you take 1 and you take this matrix R, then what will be the inverse of this matrix? यहाँ पे तो इनवर्स में निकालने के लिए एक डिनोमिनेटर में होगा r into 1 multiplied by 0 into p. So r will be in the denominator. Now when we divide by this is 1,
So determinant will be here, first element of the determinant will be 1, and 1 divided by r, that is r inverse. So r inverse is equal to the r transpose. So here the r transpose has come. Understand? It is related to that the inverse of that matrix. I will show you by this whiteboard. Suppose here you have r p scaling factor 1 and 0. This is determinant matrix T homogeneous transformation matrix. Then what will happen is that T inverse equal to adjoint matrix, adjoint of T and magnitude of T, and then adjoint क्या होगा इसमें 1 और 1 होगा, इसका P का होगा 0 एंड इसका 0 का हो गया P एंड 1. ओके, तो ये माइनस P आएगा यहाँ पे. अब इसका ट्रांसपोज ले लो. Now you take the transpose of this and divided by r into 1 and 0 minus 0 into P, that is r. What happens here now? 1 upon यहाँ पे नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या आ जाएगा? 1 0 माइनस P एंड 1. यहाँ पे आ गया ये. अब यहाँ पे ले लो R, तो ये क्या आ जाएगा? R इनवर्स माइनस R इनवर्स P एंड 0 एंड 1. यहाँ पे R होगा क्योंकि इसका 1 का R होगा यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आएगा. तो R बाई 1 ये इतना मैट्रिक्स आएगा. अब चूंकि हम जानते हैं कि R इनवर्स इक्वल टू R T, तो क्या आया हमारा पूरा मैट्रिक्स? RT and minus RT P and 0 and 1. RT is the 3 by 3 minus RTP is 1 by 3, 3 by 1. ओके, 3 कॉलम होंगे, एक नंबर ऑफ रो 3 होंगी और कॉलम 1 होगा. और रो एंड कॉलम लेते हैं फर्स्ट में, तो जो होगा उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 3 into 1. ओके, दिस इज 3 into 1, दिस इज 1 into 1, ये 1 into 3 and 3, दिस इज द 3 into 3 मैट्रिक्स. तो is it clear about how this matrix has come? Inverse homogeneous transformation. Students please clarify. Yes sir. क्या समझ में आया चीज कहाँ से आया है? इनवर्स ऑफ द होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन. At least 1 or 2 students must respond at this time when I am asking something to assure. Yes sir. हमारा बेस्ट स्टूडेंट कौन है यहाँ पर अभी जो हमेशा रिस्पॉन्ड करता है? एक वो लड़का है, सजल एंड अचिंत्य, मोहन पार्थ. अचिंत्य कहाँ चला गया? So I end today now this is inverse transformation matrix, and now suppose I was discussing always this figure in the whiteboard. I have shown this figure.
you can see this is the rotation. Okay, rotation and translation, which was discussed here. So t is given like 0 minus 1 0 1 0 0 0 0 1. This is the complete homogeneous transformation together with including the rotation as well as translational matrix. Okay, uh, then it is given here, and we need not deriving it. It is given here. Then to obtain the inverse transformation of this homogeneous matrix, we will use we will first determine that 3 by 3 order matrix is R, and this 3 element vector is P, and this is 1. So we will first take out these matrices, and then we will calculate RT, and then multiply RTP, and then all the transformation we will get, complete my transformation we will get here. Now suppose that some point is defined in a fixed frame, then inverse transformation will be there for getting the location of that point in moving frame. So inverse transformation is used for this. Okay, here uh, suppose that any point in fixed frame equal to, means in the terms of complete homogeneous transformation, it is equal to suppose that 1 moving relative to f. Okay, and pf, and this is also you can use here the tf to m in place of h. In some books h is used, and in some books t is used. So here you can get the pf. But if you want to determine the pm, then what will you have to do? Pm equal to t inverse that we have calculated here, and the coordinate in the fixed frame. Okay, have you understood this? Students, please tell me, have you understood this? यार क्या बात है यार, no one is giving the response, means no one has understood this. Yes, sir. किसी ने नहीं समझा क्या? By your yes sir, I can understand that no one has understood, because I was asking, no one has understood. तो किसी को भी समझ में नहीं आया क्या? ये क्या रिपीट करूं? नहीं सर, आ गया। है ना, इसको दोबारा थोड़ा सा देख लेना, या कि ये लेक्चर रहेगा तो इसको दोबारा से देख लेना, तो पूरा समझ में आ जाएगा। एक बार में समझ में आएगा, ठीक है, नहीं फिर से देख लेना, तो चीजें समझ में आ जाएंगी। एंड देयर इज नथिंग, ओनली द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ऑल दिस बेसिक थिंग्स which you have used in 12th. Matrix was also in the 12th ना, 12th class. So मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है और नहीं कुछ है, ठीक है। Yes, sir. आ गया समझ। तो मैं अटेंडेंस डाउनलोड कर लेता हूँ।
Okay, so now I am about to close the meeting. Before closing the meeting, 5 minutes I will give for taking the feedback from you about this class, what the improvements can be done, what are the shortcomings, what you need, what are your expectation. You can say me, and I am ready to try for that. And any feedback you can give, whatever is in your mind, you can give in the terms of feedback. कुछ भी बोल सकते हो आप, जो आप बोलना चाह रहे हैं कि कुछ है तो बोलना है तो बोल दो. एनी स्टूडेंट? सजल? हाँ सर आज हाँ बोलो, कुछ है हमारे लिए इंफॉर्मेशन कुछ आप लोगों की तरफ से? नहीं नहीं सर कुछ नहीं है सर. ठीक है, मीन्स आर यू सेटिस्फाइड विद द कंटेंट एंड यस यस सर. ओके. एनी अदर स्टूडेंट वांट्स टू से समथिंग? हेजिटेट बिल्कुल ना होइएगा, जो भी बोलना है बोल सकते हैं हमको. ठीक है. ओके, सो आई थिंक दैट lecture was satisfactory as per your expectation, and now all of you can leave the meeting, and I am stopping the recording.